डिसीजन मेकिंग. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन. हाँ भाई, नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रायोरिटाइजेशन, इन्फॉर्म डिसीजन. पेपर सेटर सेज ऑफिशियली ऑन द वेबसाइट कि भाई मैं तुम्हें ये 4 चीज़ों के ऊपर चेक करूंगा. What is critical thinking? Can you think on the feet? It could be a managerial problem. It could be a new product launch problem. It could be a problem of an HR as well. He's also going to check you कि भाई मेरी problem solving skill क्या है. On the feet, how would you take a decision in a group if you're a part of the group? Prioritization, पहले तुम क्या fix करना चाहोगे? That's also going to be a question. Informed decision, सारा data तुम्हारे पास है, थोड़ी सी मैच करो एंड देन यू गाइस कैन चेक इट आउट कि भाई क्या क्या हमारा होना चाहिए. दैट डिसीजन मेकिंग एथिकल डिलेमा पूछता है. एथिकली यू हैव टू बी ऑलवेज एथिकल इन लाइफ. व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग डायरेक्टर ऑफ एक्सेल जमशेदपुर, आई वाज आस्किंग अबाउट दिस एथिकल डिलेमा क्वेश्चन. He said people get unethical, maybe you can take some cues from that. People get unethical when they take shortcuts in life. तो रूल नंबर 1, अगर इसका कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं करना है, कोई भी काम लंबा चौड़ा डिसीजन लेके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके करना है. ये तुम्हारा एक सवाल का मैंने आंसर कर दिया है एज पर द जॉर्ज सर डायरेक्टर साहब, उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये वाली बात की थी. नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल इश्यूज. देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज इन योर कंपनी. व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू टेक? लाइक फॉर एग्जांपल, would you fire people directly? Of course, if the people resources are the big key, you're a startup, what Zomato did, what Amazon did, what Google did. भाई अगर सबसे पहले फाइनेंशियल जो बोझ है उसको तुम उतारोगे, या ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू सेव पीपल फर्स्ट, बट अगर तुम्हें पता है पूरे पैसेज में ये लिखा हुआ है, तो अगर एथिकल डिलेमा और फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कि तेरी कंपनी 3 महीने बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे एथिकल डिलेमा को किल करके एंड देन यू गाइस कैन थिंक अ फाइनेंशियल डिसीजन. प्लीज चेक इन द क्वेश्चन. आई विल टीच यू DM, yeah? I'll talk about the course in a minute. I'll teach you DM. So please check in the question what kind of hat he wants to wear. He wants to make you wear a financial officer hat. He want to wear you ethical dilemma hat, or it's a managerial issue as well. There could be an HR issue. Say for example, when say Virat Kohli is doing wonderful, but whenever he comes takes captaincy, उसकी परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है. पर विराट कोहली अगर कैप्टेंसी लूज करेगा तो भाई उसके जो ब्रांड डील्स है वो भी कम हो सकती है. अब तो अच्छा कर रहा है वो, तो व्हाट डिसीजन ही शुड टेक. 2000 कोविड के टाइम पे आपको पता है विराट कोहली परफॉर्मेंस वाज डाउन. सिचुएशनल इशू, यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू आर डूइंग अ ग्रुप स्टडी, ग्रुप वर्क, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एक तुम्हारा ग्रुप मेंबर ने काम नहीं किया तो तुम क्या करोगे. उसके घर पे कोई बीमार हो गया तो व्हाट वुड यू डू. हियर थिंक वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज इट्स अ सिचुएशन इशू फॉर श्योर. नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट इश्यूज. तुमने कोई भी काम किया है, प्रोडक्ट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल होंडा सिटी कार और टाटा नैनो कार. टाटा नैनो लॉन्च की गई और टाटा नैनो को वैसे ही बड़ा सारा दे गॉट लॉट ऑफ फ्लैग, बट देयर वाज बर्निंग इश्यूज. ओला इलेक्ट्रिक, प्रोडक्ट इश्यूज. नाउ ओला हैज नॉट हैंडल्ड, इफ आई वुड बी द दैट पेपर सेटर, आई वुड गिव वन ऑफ द इश्यूज ऑफ ओला फॉर श्योर. HR इश्यूज, एक बंदा है उसका तुमने रीजन चेंज कर दिया, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल हु गॉट देयर डैड्स वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो माय डैड वाज आल्सो बैंकर, सो यू कीप चेंजिंग योर लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज बैंकिंग, आर्मी, दे आर लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हैंस दे कीप ऑन चेंजिंग. बट तुमने बैंक के अंदर सब चेंज कर दिए लोग. हर 18 महीने वाला SBI के अंदर जो अमरावती में था वो जमशेदपुर चला गया, जो जमशेदपुर वाला था वो दिल्ली चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ वुड यू डील विद दिस HR इशू? रीजन चेंज हो गया, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग.